Okay, so good morning. Uh, Welcome you all again to the SY BSc Computer Science. Um, the results of FY are already declared, and I hope everyone has received their result. Okay, so a few of you have still pending. Okay, but soon you will get. And once college will reopen, the college will fix the date, and they will tell you to collect the your result copy from the college. Okay, so we'll move on to the SY. I hope I'm audible and right. Okay. Um so today I'm taking this orientation for your SYCS. Okay, and I want you people will not just keep quiet. Will respond to me. Okay, is it okay? Okay. Uh, so basically, uh, we have already completed with the FI, and I hope people now you know what exactly our computer science is, right? You are quite familiar with our department. Is it true? Yes, please be interactive, right? Okay. So the same way, we need to move on. Unfortunately, that still time has not changed. Okay, we were hoping this year at least we will meet in the college, but still there is no such kind of news that college will reopen and will come to the college. Uh, Again, this year also, at least we have to start with the online platform only. Okay, the same way we have done the last year. Okay, so I know you people want to visit the college, but we are helpless. Uh, we can't do anything right now. Uh, I can say only one thing, that be vaccinated as early as possible. If the government will declare the then soon our college will reopen. Okay, so we'll start with your syllabus of your SY. Okay, so again, I hope you have visited the college website, and you must be aware of your syllabus. Okay, how many of you have checked the syllabus for the SY? Yes, tell me. Yes, please reply fast. Have you checked your syllabus for SY? Good, that's good. So again, in the SY, we having two semesters, semester 3 and semester 4. Um, what is the means? What exactly the advance in the SY? Okay, now you have cleared with the FY. I hope you have cleared with the basic concept of the FY. Then it will be quite easy for you to overcome this SY. Okay, so in SY we having mostly the computer science related subject. Means in FY we were having one soft skill enhancement, that is just the awareness based subject, and there were two subjects, the, those two subjects totally based on the maths and the stats. Okay, now this year we having all the seven subjects. They are core related to the computer science only. Okay, you having some of the maths, but it's not the core maths. Okay, in one subject. Okay, so here um, in the semester 3 you having total 7 subjects. Okay, and again the 3 practicals. The In the semester 3 the first subject is the TOC, that is the theory of computation, for which you don't have practical. Okay, actually it's the working of the computer, how exactly computer works, and it's like a compiler.
Okay, so for this we don't have practical, while other subjects like the core Java operating system, DBMS, then the graph theory, IoT, and this web programming. Okay, now this is actually the syllabus we have designed. ओके ऑलरेडी मीन्स जैसे अब पैंडेमिक के पहले ये सिलेबस अपना ये सेट था अपने डिपार्टमेंट का, दैट इज वी हैव डिजाइंड ऑलरेडी, बट ड्यू टू लास्ट ईयर पैंडेमिक इशू वी वर लाइक कि स्टार्टिंग के टर्म में ये कॉलेज रीओपन नहीं हो रहा है. ओके, so maybe we'll get chance in the second semester. So for this purpose we have just shifted this physical computing and IoT programming subject into the SEM 4, एंड सेम 4 का जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हम लोग ने सेम 3 में शिफ्ट किया है. ठीक है, यहाँ पे जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो सिर्फ सेम 3 में शिफ्ट किया है, और ये जो IoT है ये हम लोग ने सेम 4 पे शिफ्ट किया है. द रीजन बिहाइंड दिस बिकॉज द फिजिकल कंप्यूटिंग एंड IoT सब्जेक्ट जो है उसके प्रैक्टिकल्स जो है वो रास्पबेरी पाई डिवाइस के ऊपर होते हैं. ओके, एंड those devices, those all Arduino devices, they are in the college. Okay, and for this purpose only we have shifted this IoT to the SEM 4 and the computer networks to the SEM 3. Okay, you will get the updated syllabus. ये जो updated part है वो आपको college website पे मिल जाएगा. ठीक है, so you having total 7 subjects. All those 7 subjects are the core computer science subjects. Even this ability enhancement course is the web development course. Okay, so all the concepts of the web development like the JAX, PHP and everything, it is included in this web programming. Okay, so basic जो programming है, जो important programming जो है that computer science student must know, all this programming part we have included in the SY. Okay, in FY we have already done with the Python. Okay, in both the semester you have completed the Python. So here in SY we have included the Java. Okay, so again in the first semester you having the in semester 3 you will have the basic Java. In semester 4 you will have the advanced Java. Same like the Python, जैसे sem 1 में basic Python था and the sem 2 में advanced Python था. Okay, ये साल वहाँ पे सिर्फ Java है. Okay, then DBMS आपको sem 1 में भी था, उसका ही एक्सटेंशन जो है, ओके उसका एक्सटेंशन जो आपने MySQL में किया था ये अब आप लोग Oracle में करोगे. ठीक है, सो उसका जो एक्सटेंशन है अगेन वी हैविंग द सेम 3. Combinatorics and graph theory is the maths based subject, okay, but all the computer application we have included in this subject. Okay, so these are the 7 subjects you have to learn in the sem 3, while again the 7 subjects you having for the sem 4. Okay, again all these 7 subjects are the core computer science subjects. Okay, we don't have any soft skill based or the environment based subject in the SY. जैसे आपको FY में था वैसे अभी SY में नहीं है. सारे के सारे 7 subjects, even we call it as ability enhancement course, but it is the totally computer science based course. Okay, जहाँ पे आपको sem 3 में web programming था वहाँ पे आपको sem 4 में Android रहेगा. Okay, so in the sem 4 you having the fundamentals of algorithms, advanced Java, computer network के जगह पे IoT आ जाएगा, software engineering, linear algebra using Python. ये थोड़ा सा mathematical subject है, but still we are using the concept of Python here in the linear algebra. Then the .NET. Okay, you will going to learn the ASP.NET over here and the Android. Okay, so all these 7 subjects are again this computer application based subjects only. So you this become quite tougher than the FY. Okay, थोड़े से एडवांस सब्जेक्ट्स है FY से, तो उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लेनी पड़ेगी. Okay, I hope you people cleared with the syllabus of SY. Yes, any doubt in the syllabus? सिलेबस में किसी को डाउट है? Good. Okay, so I hope people are ready to go with this syllabus. Okay, now I will tell you
what exactly we have to do in the SY. This with this syllabus, we need to do the number of things in the SY. Basically, कैसे होता है ना कि we having total 3 years, okay, and for the third year batch जो होती है वो this batch is the quite challenging batch for us because for with the third year we need to do the number of things like they have to prepare for the final exam, then they need to complete the project part in the entire year, then the number of placements happens in the last year, okay, then the students need to give the number of entrance exam if they are preparing for the same for the further studies, okay. So for us, the TY is the very challenging batch. They need to do the number of tasks at the same time. Okay, so basically, we are focusing them towards their studies only. Okay, because for them, the placements and all this stuff is very important. The FY batch is a very new batch. Okay, uh, those students always takes one or even the 2 semester to just understand what exactly the computer science is. Okay, so we cannot expect more from the FY students. Okay, so remains with the SY. So whatever other tasks we are doing in our department, okay, so for this we need the more and more contribution from the SYCS students. Okay, I hope you people can understand me. Yes, Samsha? Yes, ma'am. Yes, please tell me. Okay, so I we people having more and more expectation from the SY students because we have to study, we have to complete the syllabus, we have to give the exams, but with all this we need to do the number of activities. Okay, we have to do number of things as a part of the department. Okay, and for this we need the more and more contribution from all of you, that is from the SY batch. Okay, you will be a senior for the FY. Okay, means your batch will be the intermediate between the FY and the TY. You have to think about how you will appear for the TY, what you have to do next. Also, you will be the intermediate between the FY and the TY. Okay, so for this purpose only, I want to tell you the number of things today कि हम लोग को ये साल क्या क्या करना है. Okay, so I hope you people are ready to contribute. You people are ready to support us. Yes. Yes or no? Good. Okay. So we'll start with like हम लोग अपने डिपार्टमेंट का, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि अपने डिपार्टमेंट का एक इवेंट होता है, बराबर है, टेक्निकल इवेंट होता है. एक्चुअली एवरी अल्टरनेट ईयर वी आर डूइंग इंटर कॉलेजिएट इवेंट. ओके, वी कॉल देम, आवर डिपार्टमेंटल इवेंट का नाम है टेकोरा. So वो event actually this task is done by the students only. Okay, it is overall the student contribution. We are always there to support you. We are always there to guide you. Okay, but it is totally done by the students. Okay, so we are just conducting, or we are just arranging the number of events over there. We are calling the students from other colleges. We are inviting the students to become or to participate on all these events. Okay, so we need to do the lot of planning. We need to do the number of things to implement properly this event. Okay, so for this we need the help from the SY students. Means if we want what more and more SY students will contribute over towards this. Okay, and our event will become the more and more successful. Okay, so this event mostly it happens, मतलब जब कॉलेज चालू रहता है तो वो इवेंट नॉर्मली दिसंबर में होता है, ठीक है. बट अभी ये साल अभी पता नहीं हम लोग को लास्ट ईयर जैसा ऑनलाइन ही करना पड़ेगा या वो ऑफलाइन होगा. इट इज द मोर एंड मोर फन व्हेन इट इज द ऑफलाइन.
ओके जब वो हम लोग 2 दिन का इवेंट करते हैं, जब कॉलेज में करते हैं तो वो इवेंट 2 दिन का रहता है. नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ इवेंट्स वी आर प्लानिंग, नंबर ऑफ इवेंट्स वी आर executing at the same time. Okay, some events are technical one, some events are the non-technical one. Okay, so this is more and more fun because this planning happens, मतलब ये इवेंट 2 दिन का रहता है, पर ये जो काम करते हैं ना स्टूडेंट, वो इट इज मोर देन 1 month. ठीक है, so this is very I can say it is very fun part for all of us, and it is where we are learning number of things. ओके, सो ये साल पता नहीं ये ऑफलाइन होगा या नहीं होगा. सो वॉट एवर इट इज, इफ ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग को उसको ऑनलाइन तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा. Okay, so I want if people will start thinking for this, how we can do means how we can execute this event from our departmental side. Okay, तो उसका प्लानिंग है वो हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे. तो एटलीस्ट अभी से हम लोग प्लान करेंगे तो वो आगे जाके वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे. ठीक है, सो फॉर दिस आई नीड द सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. इज इट ओके? ठीक है, देन with this event we are also conducting some different kinds of the activities. Okay, like we are conducting some alumni sessions. Okay, where we are calling our alumni, our own students who are at a very good place in the different organizations. Okay, and to share their experience, because what happens, we teacher, we always there to teach you, we are always telling you the number of things. Okay, but when the student like you who has already passed out and he's sharing his experience with you, then it is the I can say it gives you the more judgment. Okay, what exactly you have to do the next. Okay, so for this purpose we are calling the alumni every month. We are calling a one alumni to share their experience. Okay, so what we want all of you to attend this session, because these sessions are very important for you. Okay, so other than syllabus, it is very important for you to attend all these sessions, all these seminars. Okay, then this year we have to complete one value added course. Okay, means our department, actually all the departments from our college, they are conducting the value added course. Okay, what is value added course? Rather than the syllabus, okay, हम लोग का जो syllabus है, that is the fixed syllabus. आपका जो final exam होगा, that is the semester 3 exam, semester 4 exam, वो ये आपका syllabus based exam होता है. ठीक है, बट आपका जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है, जो ग्रेड मिलता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट्स व्हाट एवर यू हैव रिसीव्ड इन योर रिजल्ट. ओके, आपने कभी रिजल्ट कॉपी, आपको कोई रिजल्ट कॉपी मिला है क्या? फर्स्ट सेमेस्टर का भी नहीं मिला है ना अभी तक? यस, रिजल्ट कॉपी आपने देखा है आपका? नहीं ना, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी नहीं दिया है ना अभी तक रिजल्ट. ओके, सो ये जो रिजल्ट लगता है, यू आर, इट इज टोटली बेस्ड ऑन, इट इज द ग्रेडेड सिस्टम. ओके, यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ परसेंटेज, आपको ग्रेड्स मिलते हैं, एंड ग्रेड्स जो मिलते हैं वो क्रेडिट बेस्ड होते हैं. ओके, आप जब सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट के बाजू में क्रेडिट्स लिखे हैं. ओके, सो हाउ मेनी क्रेडिट्स यू हैव कंप्लीटेड in the entire year. Okay, and based on this your final grade get calculated. Okay, जब आपको रिजल्ट का कॉपी मिलेगा ना, तो उसके पीछे पूरा फॉर्मूला लिखा है कि एक्चुअल आपका जो ग्रेड है वो कैसे फाइनलाइज होता है. ओके, सो ये जो ग्रेड है उसके जो क्रेडिट्स है, ओके, यू नीड द मैक्सिमम क्रेडिट्स. ओके, सो आप जो एग्जाम देने वाले हो और एग्जाम से जो मार्क्स मिलने वाले हैं, वो मार्क्स में भी हम एडिशनल मार्क्स ऐड कर सकते हैं इफ यू आर अटेंडिंग सच काइंड ऑफ द वैल्यू एडेड कोर्सेस. Okay, so this year you have to do means you have to complete the many value added courses. ठीक है, नॉट मेनी, अपने डिपार्टमेंट हर एक क्लास के लिए एक वैल्यू एडेड कोर्स तो मतलब अरेंज करता है. वो वैल्यू एडेड कोर्स इट इज मिनिमम 35 आवर्स,
35 आवर्स का कोर्स होता है. सो बेसिकली जब आपका छुट्टी का टाइम रहता है, मोस्टली इन द दिवाली वेकेशन और जब आपका ये क्रिसमस का वेकेशन वगैरह, कोई भी वेकेशन के टाइम पे हम लोग ये कोर्स अरेंज करते हैं. ओके, हमारे फैकल्टीज या हम लोग कभी कभी इंडस्ट्री से भी फैकल्टीज बुलाते हैं, और वो फैकल्टीज आपका ये मतलब ये एक्स्ट्रा, ये सिलेबस छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाते हैं. ओके, मतलब इफ यू विल चेक द सिलेबस ऑफ टीवाई, टीवाई का सिलेबस आप चेक करोगे ना, तो टीवाई के सिलेबस में अभी अपडेटेड है या नहीं पता नहीं, मैं चेक करके बताती हूँ आपको. कॉलेज के वेबसाइट पे आप सिलेबस चेक करो, उसमें एंड में वहां पे 3 अपने अपने डिपार्टमेंट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड कोर्स कंडक्ट करता है. मतलब उसमें से कोई भी एक कोर्स कंडक्ट किया जाता है एंटायर ईयर में. तो बेसिकली दिस कोर्स इज अदर देन द व्हाटएवर सिलेबस वी हैविंग इन द FY TY. ओके, जैसे लास्ट ईयर मोस्टली वही कोर्स हम लोग इस साल भी कंडक्ट करेंगे. लास्ट ईयर हम लोग ने एक वैल्यूएटेड कोर्स कंडक्ट किया था, जिसमें आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर प्रोग्रामिंग, अर्डिनो एंड रोबोटिक्स, ये 4 पार्ट्स पढ़ाए थे. ओके, सो ये कोर्स आपको आप कंप्लीट करते हो. ओके, प्रॉपरली उसके लिए अटेंडेंस कंपलसरी रहती है. वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक एग्जाम लिया जाता है. वो एग्जाम का क्राइटेरिया रहता है, उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं तो ही आपको एक वैल्यू एडेड का सर्टिफिकेट मिलता है. ओके, एंड इफ यू विल शो दिस सर्टिफिकेट, और इफ यू विल सबमिट दिस सर्टिफिकेट, ओके, देन इन योर रिजल्ट यू विल गेट द 2 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स. ठीक है, if you are doing such kind of the course, okay, other than the syllabus, if you are doing something extra, okay, which is more than 30 hours, then for each 30 hours you are getting the 2 extra credits. Are you getting me? Okay, even if you are doing any kind of the online course, okay, जैसे online courses available है, NPTEL है, then Udemy है, then Coursera है, there are number of courses, number of trainings available. Okay, so suppose this course showing that you have completed the course which is more than 30 hours, okay, and if you will submit this data to me, then you will get the 2 more credits in your result. I hope you people understood. समझा? Yes. ओके, तो कोई भी कोर्स है जिसका 30 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए बस. ओके, आपको 2 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा चाहिए. तो आपने सपोज 60 आवर्स का किया है, आपको 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलेंगे. मैक्सिमम 8 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा यू कैन गेट इन योर रिजल्ट. ठीक है, सो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड ही आप कुछ और करे और मुझे दिखा रहे हो, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, इट इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर साइंस ओनली. ओके, आप जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड ही वो होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, कि because number of things you are learning more, it will be always helpful for you. Plus you are getting the extra credits in your results too. Okay, even if you are a part of the NSS, if you are part of the NCC, then other activities that we are conducting in the college. Okay, again for this also they are having the extension activities. Okay, तो ये इसके लिए भी एक्स्ट्रा क्रेडिट्स रिजर्व करके रखे हैं. Okay, so it will be helpful for you if you will be more active. Okay, if you have to be studious but you don't remain the studious, you have to contribute in the number of activities too. Okay, which will be helpful for you ahead. Okay, I hope people understood. Okay, क्योंकि कैसे है अपने लेक्चर्स जो है मैक्सिमम वी आर टेकिंग 3 और मैक्सिमम 4 लेक्चर्स वी आर टेकिंग पर डे. ओके, तो वो छोड़ के आई होप आपके क्लास में कोई जॉब नहीं कर रहा है. ओके, आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हो, बराबर है. मे बी देर आर सर्टन स्टूडेंट्स दे आर डूइंग द जॉब ऑल्सो. ओके, बट other than this 4 hours you have to keep yourself very busy. Okay, because this is the time, it is very challenging time. Okay, and you have to remember that कि unfortunately क्या हो गया है ना, कि आपको पूरा FY जो है अपने घर से पढ़ाया. आई नो आप लोग उतने इंथुसियास्टिक हो, आप लोग खुद से पढ़ रहे हो. Okay, but it makes the difference when you are coming to college and when you are learning online. Okay,
even if you are following all the things whatever we are giving to you, okay, many of you may not have the computer, okay, those people are not able to execute what exactly we are trying to give them. Okay, जब आप लोग कॉलेज में आते हो, कॉलेज में प्रैक्टिकल्स प्रॉपरली होते हैं, यू आर गेटिंग द लैब मैक्सिमम टाइम, यू नो, मीन्स वो टीचर्स के साथ आप वहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके डाउट्स जब वहां पे क्लियर हो जाते हैं, इट मेक्स मोर सेंस, राइट? आई होप यू विल एग्री विद दिस, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग के पास कुछ चॉइस ही नहीं है, ओके, वी आर ऑल आर रेडी, okay, we teachers are ready to come college. I know you students also ready to come to college, but the time is that which is not allowing us to go to college, बराबर है? एक पूरा साल हम लोग ने ऑनलाइन लिया है, जो चीज मतलब कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स स्टैट्स ये सब्जेक्ट्स भी बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है, बट एटलीस्ट दे आर डूइंग दैट टास्क ऑन द पेपर, राइट? They are doing that task on the paper. Maximum they need the calculator, okay, which everyone can have, but it's not with the computer science or the IT subject, right? कंप्यूटर साइंस IT सब्जेक्ट ऐसे है कि बेसिकली अभी आपके क्लास में भी जितने लोगों ने FY में एडमिशन लिया है, मेनी ऑफ यू वेर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द कंप्यूटर साइंस, बराबर है? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हम लोग को, मतलब हम लोग जब 12th में जो भी पढ़ते हैं, ओके, जिसका 11th 12th में या 8 9 10 में जिसका कंप्यूटर साइंस था थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है, बट जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, उनको उनको पता ही नहीं रहता है कि व्हाट एग्जैक्टली द कंप्यूटर साइंस, ओके। कंप्यूटर साइंस का एक प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है, ओके, वो लैंग्वेज हम लोग को, आप लोग जब FY में आए वो टाइम पे आपको पता चला कि यस दिस इज समथिंग वी हैविंग इन द कंप्यूटर साइंस, ओके। एंड दिस थिंग कोई भी नई चीज है, आप लोग जब तक उसको खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, खुद से वो चेक नहीं करते हो, तब तक वो दिमाग में फिट नहीं होती है, बराबर है ना, राइट? ओके, सो दिस मेक्स डिफरेंस, आई नो दिस मेक्स डिफरेंस कि आप के पास डिवाइस होगा, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप पीसी है, there are certain students they don't have PC, even if you having the PC, आप लोग जब खुद से एग्जीक्यूट करते हो, you are getting the number of errors and you just stuck over there, right? Is it true? Don't understand what exactly need to do next, बराबर है? वही चीज आप जब कॉलेज में करोगे, ओके, जब आप लोग कॉलेज में करोगे, there will be a teachers who will be there to solve your doubts. If not teachers, there will be your seniors, there will be your friends who know how to solve this doubt, बराबर है? सो वो जो एनवायरमेंट होता है कॉलेज में, वहां पे नॉर्मली हम लोग कहाँ पे स्टक नहीं होते हैं, ओके। इवन से डाउट सबको होते हैं, डाउट ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना कि हर एक जन को वो एरर्स आते ही है, ओके, और वो जब तक एरर्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ोगे। एंड द थिंग इज दैट कि एटलीस्ट जिनके पास पीसी है वो एटलीस्ट चेक तो कर रहे हैं, व्हाट अबाउट देम हु डोंट हैव पीसी, ओके। और जब तक ये प्रोग्राम आप लोग खुद से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, देन देयर इज नो मीन, बराबर है? मतलब आगे बढ़ के क्या फायदा जब आप लोग को खुद से मतलब टाइप ही नहीं करने को मिल रहा है। आप जब खुद से वो टाइप करोगे एंड बिना देखे उसको आप टाइप करोगे, और उसके बाद जब आपको आउटपुट आएगा, देन ओनली यू कैन टेल लाइक यस आई कैन डू द प्रोग्राम, राइट? बराबर है ना? ठीक है। सो unfortunately this thing is not happening with us, with your batch, again in the as well, so we have to work from the home, so it becomes I'm मतलब मैं कोई नेगेटिव साइड नहीं बता रही हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द, और आई एम ट्राइंग टू अलर्ट यू, ओके। सो वो जो डिफरेंस है, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आके पढ़ते हैं, कॉलेज में आके एग्जीक्यूट करते हैं, एंड जो स्टूडेंट्स अभी घर से पढ़ रहे हैं, okay, there may be certain gap, okay, and this is the time you have to overcome this, okay. This is very challenging one, okay. What happened,
मैं अभी से आपको क्यों बता रही हूँ ये सब कुछ, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट द सेकेंड ईयर. After 2 years or 4 years or 5 years, you have to come out of this college environment and you have to face the number of things. Okay, you have to search the job, you have to go into the organization, you have to face the interviews and the number of things. Okay, and अभी competition इतनी है कि means there are means you are aware of how people are getting the job, how people are losing the job, what is the condition of the pandemic. बराबर है ना? ठीक है. ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बाहर जॉब नहीं है. ओके, देर आर नंबर ऑफ जॉब्स. उल्टा आईटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. ओके, बिकॉज दिस पैंडेमिक हैज कन्वर्टेड एवरीथिंग इन द डिजिटल फॉर्मेट. Okay, and here the entire world is trying to convert each and everything into the digital format. So actually computer science IT students को बहुत ज्यादा opportunities है बाहर. Okay, what we have to do to overcome this opportunity, that we have to learn more and more. Okay, we have to be very focused. Okay, ये सब में हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा towards your subject. Maybe you people are not understanding how to write a program, how to execute the program. Okay, but एक बार नहीं समझेगा, आप दोबारा करोगे, थर्ड टाइम करोगे, फोर्थ टाइम करोगे, आपको वो समझ में आएगा. ओके, जैसे जैसे आप अभी एसवाई में, मतलब वो कॉन्फिडेंस जो कॉन्फिडेंस आपको एफवाई में नहीं था, वो आप जब एसवाई पढ़ोगे तो वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द कंप्यूटर साइंस. ओके, बट कैसे होता है कि जब आप लोग कॉलेज में आते हो तो हम लोग मतलब एज अ टीचर वी कैन इजीली फाइंड आउट कि हु इज गोइंग विद द फ्लो. ओके, एंड हु इज लैकिंग बिहाइंड. ओके, अभी ये हम लोग को ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आ रहा है. ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग को अभी इधर मतलब मेरे पास अभी यहाँ पे मुझे 55 स्टूडेंट्स दिखा, मतलब पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे. टोटल आपके क्लास में 105 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे मुझे अभी 55 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं. आपको मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं है. ठीक है, मुझे यहाँ पे मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि फाइंड आउट करना कि कौन अच्छे से पढ़ रहा है, कौन बराबर से नहीं पढ़ रहा है. वही चीज जब मैं कॉलेज में आती हूँ, कॉलेज में हमारे पास मतलब 120 स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो भी हम लोग इजीली फाइंड आउट करते हैं कि कौन प्रॉपर्ली पढ़ रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, कौन सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आता है. आर यू गेटिंग मी? यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? yes or no? Okay, so what exactly I am trying to tell you कि यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा बहुत हेल्पलेस है. हम लोग मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि आपको मतलब ये ट्रैक पे लेके आना. ठीक है, बट व्हाट वी नीड, ओके, और व्हाट यू नीड दैट योर कंट्रीब्यूशन. ओके, आपको खुद को ज्यादा फोकस करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आपके साइड से ये मतलब हम लोग तो, मैं अब आज का 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगी और आपको ये सारी चीजें बताते जाऊंगी, पर ये कितनी बात सुननी है, कितनी नहीं सुननी है. there are number of students, they are taking admission to the college just to to enjoy the college life. Okay, I'm not against the enjoying. Okay, the enjoyment is the key part of our life, because these 3 years 5 years these years will not come again in our life. Okay, and this is a very important part of our life. Okay, from the side of the enjoyment also, and the second side to it is the base of your future. Okay, these 3 years are the base of your future. Whatever you will do in these 3 years, your future is depending totally on this. Okay, so ये इतना याद रखो से नेक्स्ट 4-5 years. ओके, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और आप जितनी मेहनत करोगे ना आप लोग, उतना मतलब आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, और जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप मैक्सिमम पढ़ोगे, ओके, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दे आर एंटरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस. डेली अपडेट्स आते हैं, हर एक चीज में डेली अपडेट्स आ रहे हैं. ओके, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट
to learn all this thing. Okay, और जो है आपको वही आप properly नहीं पढ़ पा रहे हो, then आपका कुछ यूज नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट ही ऐसा चूज किया है, आपने एडमिशन ही ऐसे जगह पे लिया है कि जहाँ पे हम लोग को सिर्फ पढ़ते जाना है आगे। ओके, आप कितने भी हायर पोजीशन पे जाओ, ओके, आप वहां पे तभी टिक पाओगे जब आप लोग यू आर रेडी टू लर्न न्यू एंड न्यू थिंग्स। ओके, I can tell you this is I have completed 13 years, okay, in my career, but still in every year I'm learning I'm means मेरे हर रोज मुझे 2 से 3 घंटा पढ़ाई करने के लिए डालना पड़ता है, ठीक है। सो इतना याद रखो कि आपको पढ़ते रहना है, ओके, आप जब जितना पढ़ोगे उतना आप लोग आगे जाओगे। ओके, आर यू गेटिंग दिस? Yes. Okay, so you have to ready the learn the new and the new things. जो भी है, ऐसा नहीं है कि आपको आपके सिलेबस में 10 या 12 प्रैक्टिकल से वो आपने पढ़ लिया, वो प्रैक्टिकल्स आप लोग एक्सिक्यूट कर पा रहे हो, मतलब आपको सब्जेक्ट आ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। सी, वी आर ट्राइंग टू फायर दिस सिलेबस, we are just giving the overview of this subject. ओके, व्हाट एग्जैक्टली दिस सब्जेक्ट इज। तो वहां पे आपको वो सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, उसके आगे भी आपको पढ़ते रहना है। ओके, देयर आर नंबर ऑफ फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। ओके, यू जस्ट नीड टू मीन्स कंप्लीट दोस कोर्सेज। ओके, सो आप जितना पॉसिबल है, जितना आप कर सकते हो। आई नो देयर आर नंबर ऑफ डिफिकल्टीज यू हैविंग, बट स्टिल you have to be focused, you have to do all these things. Okay, yes, ठीक है। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड कि ये आपको मतलब कॉलेज तो अटेंड करना ही है, कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स है वो प्रॉपरली पढ़ना ही है, उसका प्रैक्टिस करना है, पर उसके साथ साथ आपको बाकी सारी चीजें भी पढ़नी है। ओके, देन उसके साथ साथ अभी आप एसवाई में हो, ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि टीवाई में जाके इट विल बी मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट कि अपने कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मोस्टली जैसे अभी ये साल का मेरे पास पूरा डेटा नहीं है, पर लास्ट ईयर मेरे पास 77 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 41 भी नहीं, 47 स्टूडेंट्स का अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। ओके, मतलब प्लेसमेंट का एक क्या होता है ना कि एक क्राइटेरिया होता है, मतलब they are giving you or they are allowing you to register with themselves only if they have, means if you people will fulfill the criteria, like they checks the 10%, 12%, then your F5 and S5%. okay, so वो criteria fulfill होता है तो ही आप register कर पाते हो। okay, so for this purpose only we are again and again telling you the results are very important. okay, see, your entire life is not based on this result, but still whenever you are just reaching the another milestones, you have to show your results. okay, and then 10, 12 and your graduation certificate is always important wherever you will go. okay, so it will be good if you will have the good marks, good credits, good grade in your final result, because TY का जो final result आता है उसमें ये 6 सेमेस्टर के एग्रीगेट होके मार्क्स प्रिंट होते हैं। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ टीवाई में मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, आपको एफवाई से लेके टीवाई तक 6 सेमेस्टर में आपको प्रॉपर्ली मार्क्स लेके आने हैं इफ यू वांट टू गुड रिजल्ट इन द टीवाई। okay, so what I'm trying to tell you कि placement is the very important thing that we have to face in the next year. so basically सबसे पहले तो उनका एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो ही आप रजिस्टर कर पाते हो। then they are taking the number of rounds, okay, like the aptitude test, then the group discussion, then number of interviews, likewise they having, हर एक कंपनी का अलग अलग वे होता है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का। तो you have to prepare for the placement also, okay, because the placement बहुत सारे स्टूडेंट्स का इससे होता है कि मुझे प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, मैं तो आगे पढ़ने वाला हूँ, या मैं बाहर जाके देखूंगा। I know there can be students like thinking like this, it's okay, but still if you're getting the placement, okay, during this
मतलब प्लेसमेंट कब होता है, आपका फाइनल रिजल्ट मिलने के पहले ही आपको एक ऑफर लेटर मिल जाता है कंपनी से. ओके, एंड मोस्टली अपने यहाँ पे तो स्टूडेंट्स का इन्फोसिस, टीसीएस, एल&टी वगैरह यही अच्छे कंपनी में ही प्लेसमेंट होता है. ओके, सो इट, even if you don't want to go for the job after the TY, it is always better to have something in your hand before you are getting your result copy. Or I hope you people are you can understand what I'm trying to tell you. Okay, पता नहीं आगे जाके क्या होगा. आप लोग मतलब हम लोग बहुत सोचते हैं कि मुझे एमबीए करना है, दैट इज राइट, दैट इज नॉट रॉन्ग. Okay, but still it will be always better to have something in our hand before uh, before we will left college. ओके, ऑफर लेटर तो एटलीस्ट आपके हाथ में, आप ज्वाइन करो मत करो आपका बात का पार्ट है. ओके, बट आपके पास कुछ तो है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बिकॉज जॉब एक एज अ फ्रेशर को सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है. वही चीज आपको कॉलेज से मिलती है, कॉलेज के सपोर्ट से मिलती है, देन इट बिकम्स क्वाइट इजी. वही चीज आप बाहर से करते हो, ओके, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रेफरेंस, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब. Okay, so it will be better if you will try to मतलब अभी से try करोगे placement के लिए, अभी से start करोगे preparation. Okay, because every company having different way of taking the exams. They are taking the aptitude test. Okay, English based होती है, logical based होती है, maths based होती है. तो उसका प्रिपरेशन आप लोग अभी से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए इजी जाएगा नेक्स्ट ईयर. क्योंकि नेक्स्ट ईयर मतलब टीवाई में मोस्टली अगस्त से लेके प्लेसमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू इफ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, ठीक है. देन एज यू हैव टू फेस द इंटरव्यूज. ओके, नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर ज्यादा दूर नहीं है. ओके, तो उसका प्रिपरेशन आपको अभी से करना पड़ेगा. ओके, सो as you are going for the interview with your computer science skills, with your programming skills, you need or the very important skills you must need, that is the social skill and the communication skills. Okay, अभी फिर से हम लोग जब ऑनलाइन कर रहे हैं, ओके, अगेन इट मेक्स द डिफरेंस व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. ओके, ऑफलाइन में हम लोग का इंटरेक्शन होता है, वी नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. बराबर है. राइट नाउ नो वन इज कम्युनिकेटिंग. ओके, जस्ट अभी आज 1 घंटा हो गया मैं लेक्चर ले रही हूँ ऑलमोस्ट, just I'm speaking. It's not happening in the college, right? So again, you have to work more on the communication skill. Okay, so आपके साइड से आपको ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि how you will improve your communication skills, because normally they will not accept if you will talk in the Hindi or if you will talk in your own language. Okay, when you will go for such kind of the placements and all, it is necessary to speak in the English. Okay, so आपका communication skill अच्छा होना बहुत important है, तो उसके लिए भी आपको work करना पड़ेगा. With this you need the very good social skills. Okay, social skills मतलब the way you are speaking. Okay, बहुत ऐसे students होते हैं कि they don't know how to speak with the other students, or they don't know how to speak with the teachers. ओके, सो ये जो सोशल स्किल्स है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप मतलब इवन इफ यू नो एवरीथिंग, ओके, आपको सब कुछ आता है, आप बहुत होशियार हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके, बट स्टिल यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक whoever is in front of you. Okay, you need not be very rude. Okay, even in the interviews the students get eliminated who having very good marks, who having very good programming skills, who can crack the aptitude test and the group discussion, but they are not means when they having such kind of the interviews, okay, the personal interviews, that time they are not able to speak properly. Okay, if they are speaking very rudely, then you will be eliminated. Okay, so these social skills are also important for you. Okay, so even if we are learning these very advanced subjects,
but we should not forget what exactly those social skills. ठीक है? I hope you are understanding. Okay. Then also remember that your attendance will be more important, because this year at least we will have the regular evaluation. Okay, there can be a surprise test. Okay, कोई भी लेक्चर में कभी भी आपको आपका 1 मार्क का 2 मार्क का टेस्ट लिया जाएगा. ठीक है, it will be totally surprise, so you have to attend all the lectures. Okay, so it will not be depend on you कि आज मन किया लेक्चर अटेंड किया, आज मन नहीं किया लेक्चर अटेंड नहीं किया. Okay, so this, if we are doing all this compulsory, because each and every lecture is important for you. Okay, all the subjects are very important for you. Okay, then the very important that we need the discipline. Okay, I don't have any problem with you with your class, but still I have observed. Okay, I don't want to call their names, but there are certain students, they are making the fun of others and fun of teachers. Okay, they're trying to making the fun of the teachers. So I don't want such kind of things should happen. You people are quite matured one. Okay, आपको पता है कि मतलब अभी तो आप इतना, ठीक है, FY में आप नए थे, आपको टीचर्स पता नहीं थे, फैकल्टीज पता नहीं थे. अभी आपको पता है फैकल्टीज आपके लिए वो भी मेहनत कर रहे हैं. Okay, whatever they are doing only for the students only. Okay, so don't try to make their fun. Okay, be disciplined one. Okay, this is not, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, एज अ टीचर हम लोग बहुत साल से ये काम कर रहे हैं. आप ये साल हमारे साथ हैं, नेक्स्ट ईयर हमारे पास दूसरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं. ओके, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर साइड. ओके, जहाँ पे आप अपनी टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो आगे जाके यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप भी कहाँ पे ना कहाँ पे जाके जॉब करने वाले हो. ओके, सो आई थिंक यू पीपल आर क्वाइट मैच्योर्ड for this, and you will understood this, how to be behave with your teachers and within your class, with your classmates, with your seniors. Okay, so you have to be very disciplined. वो चीज मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको. I hope I will not get any kind of complaint from your class. Okay, is it okay? चलेगा ना? Yes, good. Okay, so as I told you, we will have the regular evaluation, so everyone has to attend all the lectures. Okay, then as I told you, you have to be very focused. अभी आपको वो सोचना है कि हम लोग को आगे जाके क्या करना है. बराबर है? तो एजुकेशन नेवर स्टॉप्स. बराबर है? तो ग्रेजुएशन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एजुकेशन यहाँ पे स्टॉप करने की जरूरत है. देयर आर आई नो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे हैव ऑलरेडी थिंक अबाउट इट कि व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, राइट? So there are a number of courses available, or actually this is the necessity of many students कि होम बैकग्राउंड वैसे नहीं है और हम लोग को कोई भी हालत में अभी जॉब ढूंढना ही है और जॉब करना ही है. बराबर है? बट स्टिल इफ इवन इफ यू विल गो फॉर द जॉब, I feel you should not stop your education. Okay, somehow there are number of students. अभी अपने यहाँ पे भी MSc है. ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो टीवाई के बाद ऑफर मतलब ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं और करते करते वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं. ओके, because it is not necessary or it is not mandatory to go for the post graduation. okay, but still कोई भी एजुकेशन है वो कभी वेस्ट नहीं होता है. okay, it will be always helpful. okay, whenever the company having the student, one is with the BSc computer science and one is with the MSc computer science. okay, because कभी भी स्टार्टिंग में इंटरव्यू नहीं होता है. बराबर है? कभी भी स्टार्टिंग में इंटरव्यू नहीं होता है. कभी भी जब पहला प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, वो इट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट कार्ड्स.
ओके मतलब जो आप डेटा सबमिट करते हो, जो आप आपका रिज्यूमे सबमिट करते हो, उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। सो it will be always helpful if you having the more education. Okay, if you it is quite difficult. Okay, मतलब अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जॉब करते करते एमएससी करते हैं। एमएससी करना इज नॉट अ सिंपल टास्क। ओके, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दे नीड टू डू। आप यहाँ पे बीएससी में देख रहे हो इतने सब्जेक्ट्स हैं, एमएससी में तो ज्यादा हेवी सब्जेक्ट्स है, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस बिकॉज और ये अभी अभी आप लोग करोगे, मतलब ये 1-2 साल में ही करोगे तो हो जाता है, अदरवाइज इट जस्ट कीप ऑन पेंडिंग, ठीक है। सो इट विल बी बेटर इफ यू विल थिंक फॉर द योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, तो आप वैसे तैयारी आप अभी से करके रखोगे, देन इट इज बेटर। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट दैट मच कंपल्सरी, ऐसा नहीं है। आपको बीएससी के बाद भी अच्छा जॉब मिलता है, क्योंकि आपको एक बार अच्छा जॉब मिल गया ना, तो वो जॉब नॉर्मली रिजल्ट की जरूरत कब मिलती है, कब पड़ती है, कि जब आप लोग जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करते हो। ओके, वंस यू विल get selected and if you are showing more good performance, then basically वो comparison नहीं होता है कि whether you are just graduate or the post graduate, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही चाहिए, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इट विल बी बेटर कभी भी, क्योंकि कैसे होते हैं, कोई कोई चीजें ऐसी होती है ना, कि जैसे आपका अपना अभी ये देयर आर सर्टेन फील्ड्स दे नीड द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओनली। ओके, जैसे टीचिंग का फील्ड है, दे डोंट अलाउ फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ओके, दे नीड ओनली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। Okay, there is such kind of, there are number of such fields are available where they are not taking the graduate student, they are taking the postgraduate student, but still the many students with the graduation only, they have performed very nice in the organizations. Okay, and without any PG course, okay, any post graduation certificate, they are earning more. Okay, and they are performing they are having very good performance. Okay, so basically it is totally depends on you, how you are technically strong. Okay, it's just important that you have learned more. Okay, and for this purpose, if it will be better if you will go for the post graduation. Okay, now what are the different options of the post graduation available? Okay, पहला तो है नॉर्मली कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट जो है वो एमएससी के लिए जाते हैं। ओके, एमएससी इज व्हाट, इट इज टोटली इट इज रिसर्च ओरिएंटेड। ओके, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओरिएंटेड है। अभी सिलेबस अपने यहाँ पे जो सिलेबस चेंज हुआ है, इट इज मोर टेक्निकल ओरिएंटेड है। ओके, सो एमएससी जो है, यू कैन गो फॉर द एमएससी, आइदर यू कैन गो, मतलब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो है वो दे कैन डू एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, दे कैन डू एमएससी इन आईटी, दे कैन डू एमएससी इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। अभी बहुत सारे ये जो टॉपिक्स है उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन आया है। ओके, ये जो एडवांस टॉपिक्स है, ठीक है। सो आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी की डिग्री मतलब आप सपोज रिसर्च ओरिएंटेड काम कुछ करना चाहते हो, ठीक है। सो इट विल बी बेटर इफ यू विल गो फॉर द एमएससी, बिकॉज आफ्टर एमएससी यू मे गो फॉर द पीएचडी आल्सो, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है और उसमें आपको खुद से कुछ ज्यादा रिसर्च करना है, देन इट विल बी हेल्पफुल इफ यू if at least you will complete your MSc. Okay, if not, if you want to go more technically, ठीक है, more technical और चीजें आपको पढ़नी है, okay, then you can go for the MCA. Okay, that is the Master of Computer Application. Okay, now MCA is also 2 years. पहले MCA 3 years का था, अभी लास्ट 2 साल से उन्होंने कन्वर्ट किया है उसको भी 2 years में, ठीक है। बट फॉर MCA देयर विल बी एंट्रेंस एग्जाम। Okay, for entire Maharashtra, they are taking the common entrance exam, and based on this entrance exam marks, you are getting the admission. ठीक है। सो नॉर्मली जो स्पेशलाइजेशन फील्ड्स होते हैं, मतलब लाइक सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, देन सिस्टम मैनेजमेंट, ओके, ये सारी चीजें एमसीए में इंक्लूड की गई है। ओके, सो ये मोस्टली द टेक्निकल जॉब्स जो है या ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन से, they are preferring the MCA students. Okay, so it will be always better
बट एमसीए का फीस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जहाँ पे एमएससी का फी कंपेरेटिवली बहुत कम है। ओके सी, ये जो फिर से मैं बोलती हूँ कि ये जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा सिर्फ स्टार्टिंग में, जब तक आपको जॉब नहीं मिल रहा है तब तक ही है। उसके बाद इट टोटली डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। And then there is one more option you can go for, that is if you want to go in the management stream, okay, customer handling or the management stream, then you can go for the MBA. Okay, MBA के लिए भी entrance exam होती है, okay, and based on the entrance exam only you are getting the means admission in the college. ओके सो सपोज आप सोच रहे हो आगे जाके आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, ओके देन सपोज एमसीए करना है, एमबीए करना है, तो उसका भी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो भी चेक करना पड़ेगा कि वो उसके एग्जाम्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एमएससी टोटली डिपेंड्स ऑन योर ग्रेजुएशन मार्क्स, बट फॉर एमसीए एंड एमबीए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। ओके, और ये आप करना चाहते हो तो तभी करो जब आपको प्रॉपर एकदम अच्छे वाले कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। कहाँ से भी करके कुछ फायदा नहीं है, तो इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ 2 years. ओके, इट विल बी बेटर इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द गुड इंस्टीट्यूट। ओके, and as I told you, it is totally depend on your entrance marks. Okay, so it will be better if you will prepare you will start preparing for this entrance exam from right now. Okay, I hope people are understanding. I'm just trying to tell you all these things कि आपको आगे जाके क्या करना है वो अभी आपको डिसाइड करना है, and accordingly you have to prepare yourself. Everyone can have the different view. Okay, there can be students who don't want to do anything from the graduation, they just want to do the job. There can be students who want to go for the MSc, MCA, MBA, but you just find out what exactly you want to do, and depending on this how you have to prepare yourself. Okay, because this is very critical time, or this is very important time from where you can start. Okay, see the FY, why I'm telling you right now, because your FY was your first year where you just understood what exactly the computer science is. Now it is the time that you have to understand your future. Okay, you have to find out what you want to do next. Okay, so that's why I told you your next 4 to 5 years are very challenging one, very important one. ओके, जैसे ये 2 साल ग्रेजुएशन के हैं सपोज, और 2-3 साल आप पढ़ते हो, और आप जो स्टार्टिंग में जॉब करते हो उसके 1-2 साल। ओके, क्योंकि ये पूरा सेटल होने के लिए इतना टाइम तो आपको लगेगा। और जहाँ पे ये टाइम क्रिटिकल क्यों है या क्यों चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप जो परफॉर्मेंस दिखाओगे उसके बेसिस पे ही आपका टोटल फ्यूचर डिपेंड है। Okay, so for this purpose I'm trying to tell you कि start now. Okay, think now. Suppose आपको ऐसा, मतलब अभी आपको ऐसा ऐसा कोई स्टूडेंट्स हो सकता है कि अभी भी मुझे कंप्यूटर साइंस क्लियर नहीं है, मैं अभी भी प्रॉपरली प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हूँ। इट्स ओके, इट इज वेरी मच नॉर्मल। ओके, इट इज इट हैपन्स विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि नहीं समझ में आ रहा है, ओके, कैसे करना है। बट स्टिल एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। ओके, you need to revise more. Okay, there are as you people having the internet and the mobile, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो फ्री में आपको सिर्फ आप मुझे इतना बताना है कि आप टाइम वेस्ट मत करो, जितना पॉसिबली पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अभी एज आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं है कि बाहर जॉब्स नहीं है, बाहर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। और what organizations are looking for, they are just looking for the quality. Okay, they are just looking for the quality. They want such kind of the students who can मतलब ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है कि जो ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है, जो पढ़ने के लिए रेडी है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि अपना सब्जेक्ट ऐसा है जो हु इज रेडी टू लर्न ही कैन गो फर्दर। क्योंकि अपने सब्जेक्ट्स में
डेली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं, डेली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं. ओके, एंड वी नीड टू कीप आवर सेल्फ वेरी अपडेटेड. ठीक है, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस. यस, बराबर है ना? ठीक है, good. So I hope you people are ready to do all these things. Okay, now I just want to hear any kind of issues you people are facing. And मतलब अभी FY पूरा complete हो गया है, तो मुझे आपसे आपका कोई इश्यू है क्या, या आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, then you can just speak out, you can just tell me. Okay, if it is considerable, then surely we'll consider this. Yes, anyone wants to speak something? Yes, से कोई डाउट है, या लेक्चर्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, किसी कुछ लग रहा है ऐसे? बोलो. I don't want to you people should keep quiet. Okay, it was okay when it was FY. Okay, but अभी आपको आपके टीचर्स के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए. Okay, okay. Just want to know about the remaining results and admission process. See, sorry, I just forgot to tell you. Your admission process will start from the 15th June to it will be till 30 June. At least you have to take the admission. Okay, again you can pay your fee in the installment. Okay, the installment facility is provided in our college, but at least you have to take the admission for the SY to confirm your admission for the SY. Okay, so at least you have to pay your first installment. कॉलेज में रिसर्च जो है, ओके, जिसका फी पेंडिंग है, उसका रिजल्ट अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट कॉपी नहीं दिया है, पर एटलीस्ट रिजल्ट शो तो किया है. वंस गवर्नमेंट विल चूज द गाइडलाइंस, थोड़ा बहुत तो ट्रेन वगैरह चालू हो जाएगा ना, तो मोस्टली बाय नेक्स्ट मंथ यू विल कॉलेज विल गिव यू वन डे एंड यू नीड टू गो टू द कॉलेज एंड यू हैव टू कलेक्ट योर रिजल्ट. ठीक है, अपने जो लेक्चर्स जो है, इसलिए 15 जून से लेके 13 जून तक, 30 जून तक आपको एडमिशन का टाइम दिया है. 1 जुलाई से अपने रेगुलर लेक्चर्स चालू हो जाएंगे. ओके, yesterday only I have sent one schedule in your class. बराबर है. So for this purpose, instead of wasting this time, what we have kept, we have kept one program for career guidance. ओके, तो अपने डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में के मतलब आपको पता है ऑलरेडी कि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे फील्ड्स हैं. ओके, तो हर एक फील्ड में क्या स्कोप है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट नो कि what exactly they want to do next. Okay, so there are number of fields available under the computer science, means there are number of different types of jobs available under the computer science. Okay, so वो आपको क्लियर करने के लिए हम लोग ये 9 सेशंस रखे हैं. Okay, so you have to attend all these lectures where you will get the scope or the what are the career options available next. ठीक है, so everyone has to attend all these lectures. Yes, I think you can use the same ID, but all this information, see, normally fee related information, result related information, it is not actually, I just want to clear it out. This is not my task. It is done by the college office. Okay, I can use you the updates. Okay, but once I will get the notice yeah, regarding this, I will just send in your class. Okay. Anything else you want, or you are expecting from me or other teachers? If you have, I just want you people to speak out. At least
आप थोड़ा सा अनम्यूट करके बोल सकते हो लेक्चर्स में. Okay. And one more thing. Yes, anyone want to speak something? मैम बोलो. मैम मतलब जब भी रिजल्ट ये डिक्लेयर हुआ उसके बाद अगर जिसने फी पेड किया है उनका कभी रिजल्ट दिखाएंगे? उनका रिजल्ट आपको जब कॉलेज से डेट आएगा वही टाइम पे दिखाएंगे. ओके मैम. ठीक है. And also remember this कि this year I am not there to teach you any subject. Okay. So I will not be in touch with you. But still, if you people having any kind of problem, any kind of issue, okay, then you can मतलब बहुत इमरजेंसी है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कुछ है और आपको you want to stick with me, then I think you people having my number, right? You can just text me. Okay. I will be always there. Okay. Any other kind of issue you people have? Anyone want to speak something? Okay. So I hope you people will remember all these things that I have told you. Okay, and you will follow all this. Okay. So we should stop now. Okay. So shall I start today's lecture? So sorry, so, shall I stop today's lecture? Okay. All the best for your new year. Okay, and thank you so much. Okay. Sure. Bye.